Hello guys, so we are starting with 5.3 now. It has a special integral form which is uh, 5.3. Its special integral form is a into e raised to x plus c e raised to x plus d into dx. Now for this form we have to use a formula uh, in which you have to adjust the numerator as a into denominator plus b into derivative of the denominator. So there is a formula just given in the book as well. You can see that. And okay, so what we have to do basically is to adjust this numerator as we have to adjust it in the form of denominator. Okay, so directly jump to the question, which is a solved example, and then we'll solve the unsolved ones. Okay, the first example is evaluate solved. There is only one example over here. So you have to evaluate e raised to 4 e raised to x minus 25 divided by 2 e raised to x minus 5 dx. So as I've said, you have to use this formula. So numerator you have to adjust that as a into denominator. A is any constant that we have to find out, plus b is another constant, and we have to multiply it with the derivative of this. So numerator is what? 4 e raised to x minus 25. What is denominator? What is a? Is you have to keep as it is. Denominator is 2 e raised to x minus 5, and plus b as it is, plus derivative of this is 2 into e raised to x, because minus 5 it is going to become 0. I have to see two things. There is a e raised to x term over here, and there are 2 e raised to x terms over here. You have to combine these two, and the remaining constant you have to combine with the whatever the remaining constants. Okay, so what I'll for the first example I'll explain it in detail. So what you can do, if you multiply a inside, 2a e raised to x minus 5a plus 2b e raised to x. So what you can do is combine these two together, so that will make it, इसमें से e raised to x कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, 2 e raised to 2, I'll write it as 2a plus b e raised to x. So when you take it common, the common is 2a plus 2b, और e raised to x बाहर निकलेगा, minus 5a, and this is equal to 4 e raised to x minus 25. Now if you see this part 4 and this whole part is equal, because e raised to x दोनों में common है इसलिए, and this minus 25 and minus 5a are equal because they are constant, right? So that will give you us two equations. The first one is this 2a plus 2 in bracket a plus b is equal to 4. The second equation is minus 5a is equal to minus 25, right? So ये cancel हो गया, दो बचा, a plus b is equal to 2, और यहाँ से ये cancel हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 यहाँ पे जाएगा तो a becomes 5, right? If you put this 5 over here, b you are going to get as b will be equal to
minus 3. Now both of these you have to put into this equation which is given over here, and you have to replace the same thing over here. Let's see what happens after that. So ये जो दोनों हैं वो यहाँ पे पुट करना है हमको, ठीक है. ए यहाँ पे पुट होगा, बी यहाँ पे. Let's see what happens. So that will basically make 4e raised to x minus 25 as equal to 5 2e raised to x minus 5 plus b है minus 3 2e raised to minus x. सिंप्लीफाई करने के बाद I'll keep this as it is, but बस ये माइनस में सिंप्लीफाई कर देता हूँ. They'll get multiplied to become, I make it 6, and that is it. Okay, so this whole thing you have to place in the place of 4, the whole numerator. This is the numerator, right? So this is the numerator. Numerator की जगह ये पूरा रखना है हमको. So after, so the I will be equal to integration of 5 e raised to 2e raised to x minus 5 and minus 6 e raised to x divided by numerator as it is, that is 2 e raised to x minus 5, and whole you have to integrate with respect to x. If you divide this separately, they are separated with minus sign. So this is a part of numerator, this is another part of numerator separated with minus sign. So base we can give to both of them. It's just like this, a minus b by अगर c होगा तो a by c minus b by c ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है. So I'll write it as I'll write it as 5 e raised to x minus 5 divided by 2 e raised to x minus 5 as it is, minus 6 e raised to x 2 e raised to x minus 5, ठीक है, and this whole is integrated with dx. Now what you have to do, these I'm simplifying it this with very n number of steps. You can reduce the steps. Now you can see this whole thing has 2 e raised to x minus 5 जिसका डेरिवेटिव 2 e raised to x होगा. यहाँ पे this 6 we can write it as 3 into 2. Okay, so instead of multiplying it in the earlier steps, you can just keep it as it is. Okay, और ये जो 2 e raised to x है, इसके जगह हम इस पूरा 2 e raised to x dx, उसके जगह हम dt पुट कर सकते हैं, नीचे की जगह t पुट कर सकते हैं. We have practiced this a lot. Now you should do it directly. Okay, और so that will make it a log of this function. इसका इंटीग्रेशन आएगा. तो पहले मैं उनको सेपरेट कर लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे. So that will we are remaining with 5 dx minus integration of dt by t, और ये 3 बचेगा क्योंकि 2 e raised to x dx की जगह dt पुट किया हमने. When you put t as equal to 2 e raised to x minus 5, this is what you are going to get. Okay, so 5 बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 1 और ये बनेगा log t. अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला है, वैसा ही रखा है उसको. You can write plus c over here. So that will make it 5x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, minus 3 log of
2e⁻x minus 5 plus c. यू कैन राइट c1 एज वेल बिकॉज पहले हमने c लिया था. इसका रीज़न ये, अगर आप लोग इसको कॉमन निकालते हो तो एक ही c ले लीजिए चलेगा, लेकिन सेपरेटली निकाल रहे हो तो c को चेंज कर दीजिए. इसका सिग्निफिकेंस आपको बाद में समझ में आएगा. बुक में कुछ अलग दिया हुआ है लेकिन मैं सिंप्लीफाई किया है तो थोड़ा यहाँ पे हैव गिवन इन डिफरेंट मैनर. ठीक है, विल स्टार्ट विद द अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स. So the given example is, so I'll write exercise 5.3, right? So similar things we have to do over here as well. I'll see the question first. I is equal to integration of 3 e raised to 2t plus 5 divided by 4 e raised to 2t minus 5 dt. x के जगह t ले लिया है, बस वेरिएबल का चेंज है. Okay, then the same thing you have to do. So the formula for adjusting this is numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of the denominator. So I won't write it now onwards. So 3e raised to 2t plus 5 is equal to a into 4e raised to 2t minus 5 plus b, derivative of this is 4 वैसे का वैसा रहेगा. e raised to 2t का डेरिवेटिव e raised to 2t into 2t का डेरिवेटिव is 2. So that will make it, ये शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो उसका डेरिवेटिव e raised to 4e raised to 2t का डेरिवेटिव बनेगा 4 as it is into e raised to 2t into 2. That will make it 8e raised to 2t. So 8e raised to 2t that will be. ठीक है. सो जैसे मैंने बताया था, फिर आपको ये a के जो है ये e raised to 2t के जो पार्ट है उनको कंबाइन करके इससे इक्वेट करना है, और कांस्टेंट का पार्ट जो है तो इससे इक्वेट करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू, ये दोनों प्लस है इसलिए एक्सप्लेन इट. 4a e raised to 2t minus 5a plus 8b e raised to 2t. ठीक है. सो इनमें से अगर e raised to 2t कॉमन निकालो, यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ मैं आपको समझ में आने के लिए. तो अंदर क्या बचेगा, 4a plus 8b minus 5a as it is. So 3e raised to 2t. I think it is not so given wrong over here. ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, sorry for this. So 3e raised to 2t plus 5. So that makes it 3 equal to 4a plus 8b, or this 5 is equal to this minus 5a. So 5 is equal to minus 5a. That makes a equal to minus 1. ठीक है. And if you put this e over here, so it will be minus 4. Let me check the question. I have a doubt. 3e raised to 2t. Okay. 4. Right. So this will make it 3 into minus 4 plus 8b. ये यहाँ पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 बनेगा ऐड होने के बाद. b will become 7/8. अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है और ऐसे लिखना है आपको.
Okay, so the next thing is going to be, it is इंटीग्रेशन. न्यूमरेटर की जगह जो हमने ए डी प्लस बी डी डैश लिखा था, तो जो ए तो माइनस है, तो -1 इन ब्रैकेट, डिनोमिनेटर वॉज 4e⁻²t -5 plus 7/8, and then derivative of the denominator was 8e⁻²t. ठीक है. In this very step, if you want to, you can separate the denominator as well to reduce steps. Okay, so you know why we are reduced step, I have explained that. So if we have done that, so that will make it 4e⁻²t -5, और यहीं पे मैं वो सेपरेट भी कर रहा हूँ. Now if you understand this, what did I do? I have separated the integrating part as well. ठीक है, दोनों को dx dx दे दिया, और बेस जो है वो भी सेपरेट कर दिया मैंने. ठीक है, अब you have to keep this as it is. Okay, because ये जो नीचे वाला है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका मतलब है ये f of x है और ये होगा f dash of x. वी नो द करोलरी. इसके लिए हमको ये 7/8 बाहर निकाल के इस पूरे की जगह log ऑफ द डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बचेगा -1. तो राइट सम स्टेप्स. तो -1 को अगर मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 1 dx और प्लस 7/8 log ऑफ, I'll just write for you to understand integration of, ये dt है, ये पूरा dt बनेगा. See, this whole part is dt. 7/8 बाहर आया और ये बनेगा t. मतलब वही कि ये पूरा पार्ट f of x है और वही f dash x पूरा है ऊपर. So that will make it integration. I just write it as it is. ओके, सो इसका इंटीग्रेशन होगा x, तो वो -x बनेगा, प्लस 7/8 log ऑफ 4e⁻²t -5. ठीक है. सो लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिडंट डू दिस. ये मॉड में होना चाहिए, हम भूल जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे मॉड में होना चाहिए था. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज next problem is second, which is 20 minus 12e⁻x divided by 3e⁻x -4 dx. So again, the numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of the denominator. अगर आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. एक्सप्लेन किया तो इट इज़ बेटर, यू हैव टू राइट, लेकिन आपको याद रहने के लिए ये याद रखिए. ठीक है. सो द डिनोमिनेटर इज 3e⁻x -4 इज इक्वल टू a is a constant in bracket, I'm sorry, यहाँ पे मुझे 20 minus 12e⁻x लिखना था. सो ये 3e⁻x -4 लिखा, प्लस b into derivative of this will be what now? It is 3e⁻x only. So 20 minus 12e⁻x is equal to, this is 3e⁻x minus 4a plus 3b e⁻x. इसमें से e⁻x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 3a plus 3b minus 4a, and this will be equal to 20 minus 12e⁻x.
जैसे मैंने बोला था ई रेस टू एक्स को छोड़ के जो बचेगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, सो इट विल मेक 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, और अगेन 20 will be equal to minus 4a. Okay. So राइट, तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद ये तो आपको मिलेगा -5 यहाँ पे पुट के लिए, और ओरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो -5 यहाँ पे पुट किया तो ये क्या बनेगा -15, यहाँ पे गया तो कितना बनेगा +3, क्योंकि -15 यहाँ पे प्लस होगा। सो +3 इक्वल टू 3b, मतलब b क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 1। ये दोनों वहाँ पे पुट करने, सो दैट विल मेक इट, वही हमको याद रखना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, सो द इंटीग्रेशन फॉर्म अभी बनेगा क्या, -5 3e रेस टू एक्स, हाँ -4 प्लस 3e रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, दोनों को dx दे दिए, तो आपके 2-3 स्टेप कम हो गए इससे, ठीक है। और इतना ही लिखना है हमको, इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सेपरेटिंग कॉमन बेस, और उसके पहले का स्टेप जो है वो आपको ऐसा लिखना है, वो a इंटू डी प्लस बी इंटू डी डैश, राइट। सो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। देखिए ये क्या कैंसिल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया रहेगा कि इसका -5x डिफ्रेंसिएशन बनेगा, क्योंकि ये -5 बाहर जाने के बाद अंदर 1 बचता है, तो ये कॉमन ही है हमेशा कि अंदर 1 बचेगा, तो जो भी बचा है वो मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और ये 3 रेस टू ई एक्स माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन 3 रेस टू ई एक्स डी एक्स है ना। सो you can directly write log of 3e raised to x minus 4, and दोनों के लिए कॉमन प्लस c, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज